Hello everyone and welcome to another tutorial on Python function. So today we are going to see how you can create a function, how to call a function and what are the arguments and where we used it. Okay. So let's get started with how to create a function. So let I first write a syntax def, then the name of function name, parenthesis and colon, right? So this is the syntax of a function, how to create a function. So पहले def which is define. Okay, so def is a keyword. So सबसे पहले हम def लिखेंगे, then जो भी name you have to give to your function, that name you have to write, then a parenthesis and the colon. So let we create our first function. So सबसे पहले def जो कि keyword है हमारा, then the name of a function name. ये it is up to you, right? आप कोई भी नाम ले सकते हो according to your task, what type of task is, and according to that you can take the name of the function. So here I am taking the name of the function as balance, right? Then the parenthesis and the end with colon. So here I have created a function. यहाँ पे मैंने function create कर लिया है. इसके बाद जो next step होता है वो होता है working, हमें लिखना होता है. ओके, सो जो भी वर्किंग होगी इस फंक्शन की, वो फंक्शन जो भी स्पेसिफाइड टास्क हम इस फंक्शन को देंगे, वो फंक्शन हमें इसके बाद एज अ ब्लॉक ऑफ अ कोड में लिखना है. ओके, ब्लॉक ऑफ अ कोड हमें लिखना है. सो लेट वी राइट अ प्रिंट. Here we are going to give a information to the user with the help of this function. So what it means that इस function का काम ये होगा कि जब भी ये function को call करे तो जो भी इसमें जो भी मैं message अभी लिखूंगी वो message show हो, right? So available balance is okay, fine. So this is the function, this is the task of this function. यहाँ पे फंक्शन क्रिएट हो गया है. इस फंक्शन के अंदर एक मैसेज मैंने लिखा है, जो ये मैसेज शो whenever you call the function, right? So how to call the function? First let I run this cell. Now how to call this function? कॉल करने के लिए क्या सिंटेक्स है? How to call this function? The syntax for calling the function is only you have to write the name of the function and the parenthesis. कोलन नहीं लिखना है. कोलन जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिएट करने के टाइम पे हम देते हैं, अदरवाइज कॉलिंग के टाइम पे सिर्फ फंक्शन का नेम और parenthesis. So let me write the name of the function and the parenthesis. Okay, so let me run this cell. So we get the message that the available balance is 50,500 SBI Bank. So इस फंक्शन का यही टास्क था कि बैलेंस मैसेज जो है वो शो करे. Okay, so I hope you understand how to create a function. It is very easy to create a function with def keyword, and you have to write the working of that function कि क्या work होगा उस function का. In our case यहाँ पे यही function था कि ये message को show करना है. और calling कैसे हुई? calling से वो सिर्फ function का name और parenthesis, that's it. So let me take a one more example, but here we will change the task of the function. Okay, so it is easy to you to understand. Okay, so here we have created one of the function, the name of that function sub underscore num. यहाँ पे function create हो गया. अब हम यहाँ पर एक task allow करेंगे इस function को. So print sum of the number is okay. सो यहाँ पे मैंने एक मैसेज भी लिखा है और इसके साथ में मैंने वर्किंग एक मैथमेटिकल ऑपरेशन दिया है सब्ट्रैक्शन करने का. ओके, सो ये फंक्शन का टास्क ये होगा कि वो पहले तो पूरा सेंटेंस प्रिंट करके देगा आपको, देन ये इसका जो भी आंसर आएगा वो आंसर को माइनस करके आपको आंसर अलॉट करेगा. ओके, दे विल अलॉट. सो लेट मी रन दिस cell. Okay, now let me call this function by the name of the function sub num
parenthesis. Let me run this cell. Okay, so we get the output, the sum of the number is 60. Okay, जो ये हमने सेंटेंस प्रोवाइड किया था वो, और इसका जो भी आंसर आया है वो आंसर. So this is how it works, right? Sub is a subtraction, right? तो subtraction करके जो भी आंसर हमने मिला है वो, और sentence. So this is how you can create a function and you can call the function, right? So I hope you understand how to create and how to call the function. So let me go with the next topic, which is argument. Arguments क्या है? Arguments एक value होती है जो function के साथ passed on होती है. Let me check with the example so you can understand. Def int. Okay. So ये parenthesis के अंदर हमें arguments को passed on करना होता है, right? So let I take two arguments n1 and n2. यहाँ पे दो arguments passed किए, और arguments हमेशा फंक्शन नेम के बाद जो parenthesis होता है उसके अंदर हम डिफाइन करते हैं. The task of this function is okay. So यहाँ पे हमने फंक्शन को क्रिएट किया है एड इंट. यहाँ पे हमने दो आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं, एक है n1 एक है n2, राइट? Or we have also defined the sentence that the addition of the argument is, and हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पे अलाउ किया है कि n plus n2 हमें चाहिए. Okay, so let me run this first. Now we can call this function add int. Okay, at the time of calling, जब आप दो आर्ग्यूमेंट्स पास किए हो, आपने डिफाइन किया है, तो कॉलिंग के टाइम पे उस आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू भी आपको देनी. So let me give 40 67. Now let me run this. So we get the output that the addition of the argument is 107. So ये 40 और 67 ये हमारा n1 and n2 था, और n1 and n2 को प्लस करना था. यही टास्क था इस फंक्शन का. So we get the output, the addition of the argument is 107. Okay, जो वैल्यू आप प्रोवाइड करोगे वही वैल्यू पे वो रन करेगा. जो भी ऑपरेशन आप प्रोवाइड करते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन व्हाटएवर. So this is how argument works. Arguments में क्या होता है कि आप values खुद से अलाउ कर सकते हो. यहाँ पे क्या हुआ था, इस एग्जाम्पल में हमने एक स्पेसिफाइड नंबर दिया था, वही नंबर को माइनस करके हमें आउटपुट मिला था. ओके, बट with the help of arguments it is up to you. Whenever you want to run the cell or call the function, you will change your values according to your need. Suppose if I want to check the addition of these two numbers, suppose I'm calling this function. The task of this function is to add the two number, right? And if I want to add this number and this number, and let I run this, then also they give me the answer. So argument से ये होता है, according to your need, what values, what additions you want, you can write and you can easily get the output of your output of that numbers, right? So like this it is easy with the help of arguments. Let me take one more example. Def char add. यहाँ पे मैं एक argument पास कर रही हूँ f name ended with colon, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ print f name plus program, right? So what is happening here, यहाँ पे जो भी argument आप pass on करोगे वो argument के साथ में add करके program आपको मिलेगा. Okay, so this is the task of this function. First let I run this. Now at the time of calling the function, I will give the value to that argument, right? F name. Now I run this program. So we get the output Python program. यहाँ पे हमें स्पेस नहीं मिला. अगर आपको स्पेस चाहिए, so you have to add the space in the specified task. So let me add the space.
So we get the output Python space program. So this is how with the help of argument it is easy कि आप कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हो, कोई भी वैल्यू को यूज कर सकते हो उस फंक्शन में. Suppose I want to add some more values. So let I call the char add, and at this time I want to write R. So R program हो गया. If I want to, if I want here C, सी प्रोग्राम हो गया. सो आर्ग्यूमेंट से हमेशा वैल्यूज चेंज करके आप वही स्पेसिफाइड टास्क को यूज कर सकते हो, रन कर सकते हो. So this is how argument is useful, and how you can write the argument at the time of creation, and at the time of calling you will give the value to that argument. So I hope you understand how to create a function, how to call the function, and what are the arguments, right?